4% Muslim quota continues to be the big election and political flashpoint. Andhra Chief Minister has expressed support to this Muslim quota. Jagan Mohan Reddy, Andhra Pradesh Chief Minister, has said, and backing the Muslim quota, that the Muslim quota will remain at all costs. This is not religious, he says. Jagan Mohan Reddy, in fact, is adding here, we gave the Muslim quota and we will continue. Muslim quota is for the backward, underprivileged groups and they deserve it. Nobody can snatch the Muslim quota, says Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy. So that's the big news coming in, and we'll play out what Jagan Mohan Reddy said. This is big. Remember, on one side there is an alliance of Bharatiya Janata Party, Jana Sena and the TDP, and even the TDP leader had said that Muslim quota will not be taken back. But now Jagan Mohan Reddy, clearly catering to the certain vote bank, has said that there is no reason that this Muslim quota will be taken back, and that it is not even religious. It is for underprivileged and backward. Listen into Jagan Mohan Reddy. 4% రిజర్వేషన్లు ఉండి తీరాల్సిందే. ఇది మీ జగన్ మాట. ఇది వైఎస్ఆర్ బిడ్డ మాట. ఎన్డీఏలో ఎందుకు కొనసాగుతా ఉన్నాడు ఈ చంద్రబాబు అని అడుగుతా ఉన్నాడు మీ బిడ్డ. 4% రిజర్వేషన్లు కేవలం మతం ప్రాతిపదికగా ఇచ్చిన రిజర్వేషన్లు కావు. ముస్లింలలో కూడా ఉన్నత వర్గాలకు ఆ రిజర్వేషన్లు వర్తించడం లేదు. So that's the big story coming in. Remember, when the Andhra Pradesh Chief Minister say that, that will most likely resonate. It will also become a flashpoint. Now, the Muslim quota basically has been a mention and has been in Karnataka for several years now, decades in fact. But now, because of other states as well, and TDP also said, we fought for it. We went to the court to it. And now, YSRCP and Chief Minister of Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, has also said the same. Let me immediately bring in Abdul Bashir for the latest on that. Abdul, this is very interesting. It appeared that there could be the focus only in Karnataka and perhaps the jibes and taunts thrown by the BJP in other states. But even for Andhra Pradesh, this is clearly a big flashpoint now with Jagan Mohan Reddy supporting it. Well, absolutely. Jagan Mohan Reddy had been vocal about the minorities, especially in a recent statement by Chandrababu Naidu, who is from the TDP Supremo, and also with the NDA, who had also supported Muslim reservation, the 4% reservation, citing that it shall continue. It is their right and it has to be given, is what Chandrababu Naidu has said. Now we see that Chief Minister Jagan Mohan Reddy, the YSRCP chief, had made this statement where he is citing that a Muslim reservation, NRC and CAA and other sentiments of minorities, the YSR Congress party will always stand with them. And he went on to say, supporting this claim, that YSRCP in his government had given 4% reservation, where 7 MLAs are from the are Muslims, is what he meant to say. So here Chief Minister Jagan Mohan Reddy going all guns blazing against the TDP, the BJP and Pawan Kalyan JSP alliance in the state of Andhra Pradesh, where he has stated that he is with the minorities, he will stand for their empowerment. So this politics around reservation has again begun after a recent statement by Chandrababu Naidu, who had also given a statement where he is supporting the Muslim reservation. Now Jagan Mohan Reddy also saying the same. It is to be seen what would be the political scenario with just 3 days left for the campaign for these parties in the state of Andhra Pradesh. Will it be so this is the last phase, last phase of those sharp remarks that are coming in and retorts that are coming in from the BJP as well. Muslim quota clearly one of the big highlights this time, specifically for the southern states as well. Thank you very much, Abdul Bashir, for that. Let's go then on the ground. And joining me with the colour around her, Nabila Jamal is in Telangana right now. Hyderabad, Secunderabad will be two big highlight constituencies. Nabila, over to you now. How are you holding up in Telangana? Right, Pooja, thanks very much. In fact, speaking of the Muslim reservation, that seems to have been the highlight across India. The BJP has raised the issue. If they are coming to power, they're going to quash Muslim reservation. No reservation in the name of religion. It's only got to be for the economically backward sections. Based on their finances and their economic status, reservations will be given. I have with me Padma Rao, who's seated here, the man in the spotlight here, who's fighting BJP President G. Kishan Reddy in Secunderabad. Let me take the question to him.
बीजेपी अगर आएगी तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करेगी। आंध्रा चीफ मिनिस्टर ने बोला है, जगनमोहन रेड्डी ने बोला है वो रिटेन करेगी। आप बीआरएस क्या कहते हो? बीआरएस मुसलमान के रिजर्वेशन को कायम देंगे ना हमारे पास। हर जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 लाख माइनॉरिटी वोटर्स है, एक असेंबली है पार्लियामेंट सेगमेंट में, तो उनके फेवर में जो है डिसीजन लेंगे। हम अगर पूरा तेलंगाना के बारे में आप बताइए, आप जब बीआरएस पावर में था तो केसीआर ने क्या किया मुसलमानों के लिए? तो जब ये मुद्दा नहीं था, ये मुसलमानों के लिए बोल के नहीं था, जब राजशेखर रेड्डी के बेस में नहीं था, अभी जो है अपोजिशन में अब उनके फेवर में जो है डिसीजन ले रहे हैं। कैसे डिसीजन लेंगे? आपके लिए क्या मुस्लिम रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है? बीजेपी बोल रही है कि खत्म करेगी। नहीं, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीआरएस पार्टी आएंगी तो रूलिंग में ये नहीं होगा और रिजर्वेशन के लिए बहुत लड़के काम करेंगे। हमारे केसीआर साहब तेलंगाना के लिए बहुत अच्छा जद्दोजहद करे और ये तेलंगाना। मगर इससे पहले केसीआर ने तो रिजर्वेशन नहीं दिया था। केसीआर दिया था, 4% रिजर्वेशन दिया था, मुसलमानों के लिए मुसलमान दिया था। ये इम्प्लीमेंट राजशेखर रेड्डी करे थे, उसके बाद कंटिन्यू जो है सो केसीआर साहब रिजर्वेशन कंटिन्यू करे। कंटिन्यू हाँ, रिजर्वेशन था 4% का, केसीआर साहब 12% देते बोले। ये मुसलमानों को 12%? यस, मुसलमान किस बल पे? पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन के ऊपर आप रिजर्वेशन दे रहे हो या इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस बैकवर्ड क्लासेस के लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% देते बोले। ये सेंट्रल में रिजेक्ट कर दिए उन लोग, बीजेपी वाले रिजेक्ट कर दिए। फिर वही 4% कंटिन्यू चल रहा है। इंशाल्लाह आपके अगर आएंगे तो 100%, एक 2% तो बढ़ाएंगे हम। कितने? 6% सिर्फ मुसलमानों को? हाँ, सारे मुसलमानों को? सारे मुसलमानों को 4 की जगह जो अमीर मुसलमानों को भी? अमीर जिसमें जो गरीब तकवे के रहते वो हिसाब से आते। राजशेखर रेड्डी 4% दिए। कई बच्चे जो है सो इंजीनियर हुए। जब पता है, मगर अगर आप सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दोगे तो फिर अमीर लोग पूरा खा जाएंगे। नहीं, खाने का सवाल नहीं होता ना इसमें। उनका क्राइटेरिया होगा क्या? कैसा होता बोलो? रिजर्वेशन में क्राइटेरिया डिफरेंट नहीं, क्राइटेरिया रखते हैं उसमें, क्राइटेरिया रखते हैं। जो पुअर पीपल्स है उनके लिए जो फैसिलिटीज करते हैं, जो रिच पीपल है उनके लिए नहीं देते। अच्छा, तो सिर्फ पुअर पीपल के लिए। आप क्या कहते हो? बीजेपी खत्म करेगी रिजर्वेशन? नहीं, जो कौन सी भी हुकूमत रहने दो, कंपल्सरी रिजर्वेशन को खराब नहीं करेंगे हम। देना है मुसलमानों को, क्यों देना है? बोलते हैं कि मुसलमान का कौम इतना बड़ा है। देना पड़ता, हमारा हक है देना पड़ता, हमारा हक है देना पड़ता, बिल्कुल हक है हमारा। हिंदुस्तान में सब गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं, बिल्कुल तहजीब है ये। तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब है ये। तेलंगाना गंगा जमुना की तहजीब है, मगर रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन नहीं देना है, सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को देना है। मुस्लिम्स को अलग, हिंदूज को अलग, क्रिश्चियंस को अलग, ऐसा नहीं चाहिए। गलत है। व्हाइट रेशन कार्ड को किसी गरीब कौन लोग आया था वो लोगों क्यों देना? अभी 10% पे ये लोग 10% लगा है, बोलो तो अमीर लोगों पे भी गरीब लोग रहता ना, वो लोगों भी देना बोल के ऑलरेडी मोदी सरकार लेके आए ना, वो कौन सा तरीका से लेके आए? अभी बीजेपी आए तो रिजर्वेशन पूरा खत्म करने को देख रहे, मगर हम ये तेलंगाना में टीआरएस बीआरएस कितना एमपी, कितने से ज्यादा एमपी जीते तो वो रिजर्वेशन रोक सकते वहाँ पर। आप क्या कहते हो? कौम को क्यों रिजर्वेशन चाहिए? क्या आप हम भी देश के लिए उतनी मेहनत करते हैं, रजिस्ट्रेशन होना पड़ता मैडम हमारे को, क्योंकि हमारे सीएम साहब जो है केसीआर साहब सेकुलर थे, हर एक को देखे, हर एक को करे, जहाँ तक है मैटिस को ज्यादा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन SC ST OBC से छीन के दिया जा रहा है। छीन के नहीं, सम परसेंटेज अब जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए अलॉटमेंट करते हो। What you are saying that is very wrong. इंडिया में रिजर्वेशंस 3 टाइप है, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज। I'll come to you. We have on the phone line Jyotsna, who's the TDP leader. Chandrababu Naidu has also on his part said that he is going to retain the Muslim reservation in Andhra Pradesh.